Hello dear students, welcome to Sreedhar Odisha. This is Pradosh Mishra, your faculty of English. वेलकम करछि आपन समस्त को गोटे जबरदस्त सेशन आज रहिबो। आज हम डिस्कशन करिबा रादर कैरी फॉरवर्ड करिबा पार्ट 2 आवर डिस्कशन ऑन टेंस। तो जो माने इंग्लिश रे फंडामेंटल क्लियर करिया चाहउछंती फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम वेदर इट इज बैंकिंग हो एसएससी हो मोर इंपोर्टेंटली फॉर ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम पे आपन प्रिपरेशन करिया चाहउछंती तो डोंट मिस दिस। टेंस इज ए वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। ता विषय हम स्टार्ट करिबा। आपन प्रीवियस वीडियो देखिथिबे। हमें प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस कॉन्सेप्ट जानी थिलु। फ्यूचर टेंस रो आरंभ करिबा। व्हाट आर द थिंग्स सेशन टाइम देखिबा। बट बिफोर दैट आई शुड टेल यू सम ऑफ द अपडेट्स। तो अपडेट्स कोन कोन अछि फर्स्ट जानि नियंतु। फर्स्ट मन रखिबे हमर न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर बैंकिंग एसएससी रेलवेज। ओके एटा हमर स्टार्ट हे गलानी ऑलरेडी 29 जनवरी रो जॉइन करि परिबे। देन ओडब्ल्यूएससी सीजीएल हमर ऑफलाइन ऑलरेडी कोन 18 डिसेंबर रो चली छी। प्राइस इज ओनली 499। मॉक टेस्ट आपनकर रहुची ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 10:30 AM टू 12:30 PM। ऑनलाइन टेस्ट अपना लैब रे देबे। जदि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो तम पे बहुत बेनिफिट हबो। देन टेस्ट एक्सप्लेनेशन अपना मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे पाई परिबे 2 PM ऑनवर्ड्स रहबो। देन अपन देखिबे आरआरबी एनटीपीसी पाई मते ऑनलाइन टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन हमरो स्टार्ट हे गलानी ऑलरेडी 13 जनवरी रू। प्राइस इज ओनली रुपीस 499। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। मॉक टेस्ट आपनकर रहबो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 10 AM टू 3 PM। एक्सप्लेनेशन क्लासेस रहबो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 2 PM ऑनवर्ड्स रहबो। डोंट मिस इट। तो बर्तमान हम स्टार्ट करिबा कोठू फ्यूचर टेंस रू। तो आपण ध्यान दियंतु। तो एडा में फ्यूचर टेंस विषय में पढिबा। तो फर्स्ट थिंग फ्यूचर टेंस विषय देखो कोन लिखा है ना। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड और ए स्टेट माने गोटे अवस्था दैट डज नॉट एग्जिस्ट बट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम फ्रॉम नाउ। तो फ्यूचर टेंस चार्टर रहबो। गोटे होजे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर टेंस टा हम यूज करजो को में यूज करबा टू एक्सप्रेस एन एक्शन जोरे कि फ्यूचर रे हबो। तो एठी हम देखिबा ए चारटा टेंस भितर आपण देखिबे फ्यूचर सिंपल रो यूजेस अधिकार रहइबो। फ्यूचर कंटीन्यूअस रो जस्ट नॉर्मल रहइबो। फ्यूचर परफेक्ट गोटे इंपोर्टेंट। आमे फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट को ट्राई करबा। तापर आमे फोकस दबा। सो फर्स्ट टेंस एठी आपण देखि परिबे सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टा को जारी यूज होची ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टा यूज हबो प्रथमे फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। मो कहबी आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। काली मो मीटिंग अटेंड करिबी। तन फ्यूचर एक्शन पई फ्यूचर सिंपल हला। तापर हम कोन करबा ना फ्यूचर एक्शन टा बेले बेले इट इज यूज्ड टू describe an action that is bound to happen in future। ताको हमें नॉर्मली अटके दे परिबानी। जन मानकर मते जने कहबो you will be 45 next year। मु चाहिले कोन अटके दे परिबी। I may die, that is a separate issue but the point is can you stop it? Can I stop it? मु कहबी winter will come again। आउ थरे आर वर्ष winter आसीबो। हमें अटके दे परिबा कि birds will build their nests again। हमें अटके दे परिबा कि केबे भी नहीं। तेन फ्यूचर सिंपल टा कोन हुए इट इज ऑलवेज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। एडा हला द्वितीय। थर्ड यूज टा फ्यूचर सिंपल टा को जगह यूज हबो ना जेतले हम गोटे जिंस प्रति हमर ओपिनियन कहूछु। हम जने कहि परिया men will be men, women will not keep silent। तो एमिति जनरल हमर कन्वर्सेशन रे हम जदि ओपिनियन दबा चाहिबा हम फ्यूचर सिंपल टा को यूज करि परिबा। ए तीनटा हो जे तार बेसिक रूल। ताले बुझी नबा। गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा हमें कोन लिखाइ थिबो देखंतु। लिखाइ छी नाउ ए डेज विल इज ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो एडी विल एंड शाल रो गोटे कांसेप्ट रोची कहउतला जे मॉडल वर्ब पढला बेलू फर्स्ट पर्सन पाखे शाल लागिबो सेकंड पर्सन पाखे विल लागिबो। आज कल से रूल नाही। एडा आउटडेटेड हे गला। आज कल पिले हम विल टा को सब पर्सन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन पाखे यूज करी हबो। ऑलवेज रिमेंबर इट। यस महाप्रसाद वेलकम बेटा जॉइन दिस सेशन। तापर लिखाइ छै एटी शाल एंड विल टा मॉडल रे लिखाइ छै। अच्छा हो लिखाइ छै कोन विल टा को जगह यूज हबो टू शो कंडीशनल एक्शन दैट हैव एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलोंग विथ अनलेस अनटिल व्हेन इफ लिखाइ दिबो। तो माने कहरा था कोन होजी ना हमें विल टा को केतले यूज करबा ना कंडीशनल स्ट्रक्चर रे। तो या पर ही हमें पढ़िबा व्हाट इज कंडीशनल स्ट्रक्चर। चारोटी कंडीशनल स्ट्रक्चर थाए। गोटे कहबे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। एटी फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर रे हमें कोन करि परिबा ना हमें विल एंड विल रो यूजेस गुला देखि परिबा। यस वी कैन यूज। वेरी गुड। यस राम राम बेटा वेलकम। आगु को देखिबा तापर देखंतु नेक्स्ट स्लाइड को जिबा टिके। लिखा छै एठी
फ्यूचर कंटिन्यूअस टा कौन यूज करिवो ना फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन जोटा कि फ्यूचर रे होथबो अच्छा फ्यूचर रे जो घटनाटे कंटिन्यूअस होथबो सेठी दुटा पॉसिबिलिटी रहइबो आइदर इट इज ए प्लान्ड एक्शन और आइदर इट इज एन अनप्लान्ड एक्शन दैट मीन्स मु कहबी टुमारो आई विल बी वाचिंग पोकेमॉन टीवी देखिए मु एटा होजे अनप्लान्ड एक्शन बट मु कहबी डियर एम्प्लॉइज प्रकाश सर विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम नेक्स्ट वीक जदि एमती कहब तमें प्रकाश सर तो निज मन आसबे ना मैनेजमेंट प्लान एंड डिसीजन अनुसार आछंती तो पिले मन रखि तो जतले आम फ्यूचर कंटिन्यूअस आम कहवा एक्शन अच्छी तार दुईटा संभावना रहिबो गोटे हम प्लान्ड आ गोटे हम अनप्लान्ड एबे थर्ड कांसेप्ट को जदि जीवा यस आमर अन्य जने संग जॉइन करचंती यस गुड इवनिंग बेटा थर्ड कांसेप्ट देछि कोन ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रो कोन लिखा हिची ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस दैट विल बी फिनिश्ड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर ताको आम सिंपल भाव में केमती बुझिबा आम बुझिबा जे वर्तमान घटना चली फ्यूचर रे केबे सरीबो से डेट टाको मेंशन करिया पई आम फ्यूचर परफेक्ट यूज करिया जेमते कि आर वर्ष डिसेंबर को मोर ग्रेजुएशन सरी जाइथिबो तो मु तो कोन कहबी जे आई विल हैव फिनिश्ड ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर तो एबे जो ग्रेजुएशन चालुची तार एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन केबे फ्यूचर रे तो से फ्यूचर रे डेट ऑफ कंप्लीशन को कहिया पई फ्यूचर परफेक्ट यूज हुए एकदम सिंपल भाषा रे ताको बुझिबो सेमती फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रे कोन हबो ना हमें यूज करि परिया कोन आई विल हैव बीन ओके लिविंग इन दिस हाउस बाय 2038 तो 2038 को ए घरे मु रही आसुथबी ए सेंस रे हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस यूज हबो इंपोर्टेंट पॉइंट कौन देचे बाय टुमारो टिल नेक्स्ट वीक बाय मंडे आम एथो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रे यूज करिबा कारण एटा फ्यूचर रे गोटे एक्शन रो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन को हाईलाइट करिवो क्लियर एबे यूजेस गुडा देखो लेखा हो फ्यूचर परफेक्ट यूजेस गुडा कौन कहूची आई विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बिफोर सी कम्स माने कौन से आसीबा पूर्व कामडा सरी आइथिबो केमते लेखा हिची फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रो कौन दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यूअस अप टू सम पॉइंट इन फ्यूचर जो आम डिस्कशन करथिलु नाउ आम जीवा वर्तमान कंडीशनल स्ट्रक्चर एटा बहुत इंपोर्टेंट पिले मन रखि तो कंडीशन रे आम चारटा जिंस लिखिबा कंडीशन रो मीनिंग होची कोन ना गोटे थिबो कंडीशन पार्ट गोटे थिबो रिजल्ट पार्ट कंडीशन सेंटेंस टा होची गोटे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहइबो एडी कोन हबो दुईटा पार्ट थिबो गोटे हेतिबो कंडीशन गोटे हेतिबो कंडीशन रो रिजल्ट ए आंसर हम बुझियाव पड़ियो जेमते कि इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी एडी कंडीशन पार्ट होची कोन ना जदी मते तो इनवाइट करिवो रिजल्ट कोन हबो रिजल्ट हम पार्टी अटेंड करबी तो ए सेंस रे हम कंडीशनल को बुझिबा तो गोटे होची कंडीशन पार्ट गोटे होची रिजल्ट पार्ट आ पहिले मन रखि तो कंडीशनल सेंटेंस रे हम जनरली जरे पढू हम इफ को नेकी पढिबा बट आम कौन करवा ना इफ बदल रे अन्य बहुत किसी वर्ड अच्छी जोटा को आम कंडीशन रूप से यूज करिपरिबा जेमते कि अनलेस अनटिल एज सून एज ओके व्हेन एन सब आसीयो जेमते कि मु व्हेन कंडीशन कहबी व्हेन ही अराइव्स ही विल टॉक विथ यू जतल आसीयो से दोसा कथा करियो मो कहबे अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू एठी हम अनलेस ने की कंडीशन कलु आम शुड लगई मध्ये कंडीशन करिपरिबा जेमते कि शुड यू हैव एनी ट्रबल प्लीज कंटाक्ट मी जदि किसी असुविधा हो मत कंटाक्ट करू तो एमते कंडीशन रे नाना वर्ड अच्छे जोटा हम इफ बदल यूज करबा बट डिफॉल्ट रे कोटा यूज करू डिफॉल्ट रे हम इफ यूज करू एटा होचे कोन कंडीशन ऊपर गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप देखो कोन लिखा है ना कंडीशनल सेंटेंस आर आल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉज और इफ क्लॉज दे आर यूज्ड टू डिनोट दैट द एक्शन इन द मेन क्लॉज कैन ओनली टेक प्लेस इफ ए सर्टेन कंडीशन इन द क्लॉज विच इज फुलफिल्ड माने कंडीशन अनुसार रिजल्ट हबो एमसे कहिछि एग्जांपल देखो यू विल सक्सीड तू सक्सीड करबो एटा केतळे हबो प्रोवाइडेड रो मीनिंग आला इफ यू विल वर्क हार्ड इफ यू वर्क हार्ड ए वर्ड जक यूज हेछि तो एडी लिखा छि द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कंडीशन कंडीशन पे कोन वर्ड यूज हे पारे जनरली इफ बट एटी अन्य कोन वर्ड देछि प्रोवाइडेड as soon as no sooner than unless until when ए सब वर्ड जक द्वारा आम चिन्ह पारिबा जे एटा होचे कंडीशनल पार्ट उडा क्लियर आगो को जीवा वर्तमान देखंतु तो लिखा छै कोन एठी फर्स्ट देखंतु कंडीशनल सेंटेंस
if clause and main clause. If I have enough money I will go to Japan. तो conditional clause टा कौन if I have enough money. result clause टा कौन I will go to Japan. तो conditional clause is of कौन थ्री टाइप्स से केमती देछि गोटे कहछि जदि कंडीशन टा प्रेजेंट रे थिबो गोटे पास्ट रे थिबो गोटे पास्ट परफेक्ट रे थिबो तो एक्चुअली मन रखे तो कंडीशन को जब हम डिवाइड करू अन्य गोटे फेर डिवाइड करि परिबा जुडा कहउछन जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल आ गोटे अछि मिक्स्ड कंडीशनल वेरिएशन एमती बहुत गुडे अछि तो जे जो रूप रे देखि पारला कंडीशनल क्लॉज रे वर्ब टा कोन हे पारे आइदर v1 प्रेजेंट रही पारे पास्ट रही पारे अथवा पास्ट परफेक्ट रही पारे तो हम एही हिसाब रे देखिबा माने आमे कंडीशन को तीन भाग डिवाइड करि परिबा गोटे अछि फर्स्ट क्लॉज माने जेटा प्रेजेंट रहबो एटा पास्ट लिखा है सेकंड एटा पास्ट क्लॉज रहबो आ गोटे पास्ट परफेक्ट रहबो क्लियर तो आमे को केमते बुझी परिबा आमे लिखि परिबा जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेकंड एंड थर्ड एमते भार बुझियाटा सहज हबो गोटे आईडिया दे दोछि जेतले हम जीरो कंडीशनल कहबी तो सेंटेंस केमते लिखा हबो ना देखो इफ यू हिट आइस जदि आइस को हिट करिवो इट टर्न्स टू वाटर एटा पानी रे कन्वर्ट हे जिवो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो कंडीशनल कंडीशनल पार्ट कोन ना इफ यू हिट आइस रिजल्ट पार्ट टा कोन इट टर्न्स टू वाटर एडी वर्ब गुडा देखो कंडीशन को जे जदी आइस टा कम हिट करिया पानी रे कन्वर्ट होबो ना नहीं हबो काले काले होबो ना नहीं हबो मु कहया कोन चेष्टा करछि मु चेष्टा करछि जे सेम कंडीशन रो सेम रिजल्ट सबुडे ट्रू होबो ना तो एडा कहजंती जीरो कंडीशनल माने सेम कंडीशन रो सेम रिजल्ट हबो रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू एंड जीरो कंडीशनल रे वर्ब गुडा कुडा अछि हिट अछि v1 फॉर्म एंड टर्न्स मध्ये v1 फॉर्म अछि तेनो जीरो कंडीशनल रे वर्ब स्ट्रक्चर कोन हबो v1 रहइबो आको हम कोन ले बुझिबा सेम कंडीशन रो सेम रिजल्ट एमदी बुझिया क्लियर एबे वर्तमान मु जेबे फर्स्ट कंडीशनल को एट लिखि दोछि सपोजिंग आई राइट फर्स्ट कंडीशनल रिजल्ट कोन हबो ना देखो एमदी बुझिया इफ यू इनवाइट मी मत जदि तुम इनवाइट करिवो आई विल अटेंड द मीटिंग और आई विल अटेंड द पार्टी मत इनवाइट कले मो पार्टी अटेंड करबी एडा होचे एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर देखि दियो इफ यू अटेंड मी मत जदि तुम इनवाइट करियो मु कोन करबी पार्टी अटेंड करी माने कंडीशन रिजल्ट पॉजिटिव हबो बट पॉइंट अच्छे सब अटेंड करें कि काली रविवार टाइम अटेंड करें सोमवार टाइम अटेंड करें सामान्य फर्स्ट कंडीशन कौन हो सेम कंडीशन रिजल्ट ट्रू हम बट नॉट ऑलवेज सब हेनी तेना यहाँ हूँ फर्स्ट कंडीशनल कौन हो ना ये वर्ब रोचे देख इनभाइट v1 फॉर्म रत्र ये विल अटेंड अच्छी माने ये तुम जो रिजल्ट क्लॉज रे विल आसीपे साल आसीपे मे आसीपर कैन आसीपर ए सब मॉडल वर्ब पाखे v1 फॉर्म लगे यहाँ हूँ फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर जानीपार यहाँ फर्स्ट कंडीशनल कह जीरो कंडीशनल कौन होता सेम कंडीशन सेम रिजल्ट इज ट्रू v1 रोला फर्स्ट कंडीशनल कौन हो सेम कंडीशन रिजल्ट पॉजिटिव हम बट नॉट ऑलवेज तेना ये कौन हो v1 रपटे कौन रिल प्लस v1 साल प्लस v1 मे प्लस v1 कैन प्लस v1 एमती स्ट्रक्चर आम लिखा तुमको ये जिन बुझा पड़ो तापर आम जा सेकंड कंडीशनल को लेट अस हैव एन एग्जांपल जो मुझे लिखी ये सेकंड कंडीशनल कॉन्सेप्ट कौन रोचे देख मुझे इफ आई वेर ए किंग जदि मुझे राजा होता मुझे कौन करती लिखी आई वुड बिल्ड ए पैलेस मु गोटे महल तैयारी करती तो ये सेंटेंस कौन हो इफ आई वेयर ए किंग मीनिंग हो कौन जदि मु राजा होता कौन एटा इमेजिनरी कंडीशन है ना नहीं तो सेकंड कंडीशनल हूँ इमेजिनरी कंडीशन तो इमेजिनरी कंडीशन कौन कहूँ जदि मो राजा होते मु पैलेस तैयारी करी बट तैयारी करि पारिछि कि करि पारिनी तामाने एटा जो सेकंड कंडीशनल जहाँ कहूँ एटा कौन हो ना इमेजिनरी कंडीशन रो नेगेटिव रिजल्ट देखो इमेजिनरी कंडीशन रो नेगेटिव रिजल्ट देखो माने एटी वर्ब कौन रोचे वेयर माने एटा हम v2 आउ हमर रिजल्ट रे कौन रोचे
एटी विल हबनी एटी हम वुड एटी कैन हबनी एटी हम कुड सेटी मे हबनी एटी कौन हम माइट विल कुड माइट ए भलिया प्लस v1 फॉर्म लागिबो ताले डिफरेंस जानि परलो पिले सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन रो फर्स्ट कंडीशन रो रिजल्ट टा पॉजिटिव अछि तेनु विल कैन रहला v1 फॉर्म रहला सेकंड कंडीशन रे कोन अछि ना इमेजिनरी कंडीशन रो रिजल्ट रा नेगेटिव अछि नेगेटिव थिबारो एटी विल हबनी वुड प्लस v1 कैन हबनी कुड प्लस v1 मे हबनी माइट प्लस v1 एटा होची डिफरेंस एबे जीवा मानकर मो फोर्थ को जोडा कोचन हमर थर्ड कंडीशनल सहज भाव रे बुझी जायते आई होप जतन मु लिखेबे थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर कोन हबो देखो इफ लिख दवा भल से इफ he had asked me जदि से मते पचारि थांता I would have helped him मु ताकू सहाय्य करि थांती काई सेंटेंस ता पढिबा चललो if he had asked me रो मीनिंग कोन होची जदि से मते पचारि थांता माने एटा को कंडीशन को गला एटा होची पास्ट कंडीशन को गला बुझि पारलो थर्ड कंडीशन ता कोन होची पास्ट कंडीशन को बुझाइला जे जदि मते से पचार थले तो कोन करथांतो सहाय्य करि थांतो माने करिछु ना करिनु तेनु कर तो कहू ना करि थांतो बोली तमे थर्ड कंडीशन रो कांसेप्ट कोन हला ना गोटे पास्ट कंडीशन रो नेगेटिव रिजल्ट गोटे पास्ट कंडीशन रो नेगेटिव रिजल्ट थिले आमे कोन करिया हैड प्लस v3 थिबो एडी कोन करिबा would plus have plus v3 could plus have plus v3 ओके should plus have plus v3 ए वर्ड गुडा को इंटीग्रेशन हबो सामान्य एडी कोन होचे थर्ड कंडीशन स्ट्रक्चर कोन होचे ना वर्ब रहबो had plus v3 और रिजल्ट क्लॉज रे कोन रहबो हेड एमि देबो देखो would have किंबा मे न थाई कोन करियो might have हेड एमि लाइक would have might have plus v3 एटा होचे थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर तो जीरो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर क्लियर हे जेतिबो एहा व्यतीत आमे कोन कर परिया ना गोटे अछि जोडा कोचने मिक्स्ड कंडीशनल एबे ता विषय गोटे आइडिया दे दिछि पिले हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एबे जदि मु लिखबे जोडा कोचने मिक्स्ड कंडीशनल जतन मु लिखे मिक्स्ड कंडीशनल आर मीनिंग होचे कोन मिक्स्ड कंडीशनल मीनिंग होचे present result of past condition रो present result को बतेबो जिंदे रास्ता जाउ जे हजि जाउ छी मु कहबे जदि मैप रे थिले आज हम हजि न थांदे जदि हम पाठ पढ़थांदी एबे ओटे डॉक्टर टे हेथांदी तो ए क्षेत्र रे हम कोन करिया मिक्स्ड कंडीशनल यूज करिबा फॉर एग्जांपल कोन हबो ना जेमते कि इफ आई हैड अ मैप जदि मो पाखरे मैप था इफ आई हैड अ मैप आई वुडंट बी लॉस्ट मो हजाई न थांदी एमदी गोटे एग्जांपल आस परियो जदि द्वितीय एग्जांपल देबी आंसर हम एमती लिखि परिबे एठी इफ आई हैड वर्कड हार्ड मु जदि परिश्रम करथांती आई वुड बी ए डॉक्टर नाउ एतळ मु गोटे डॉक्टर रे हेतांदी आई वुड बी ए डॉक्टर नाउ आई कैन राइट लाइक दैट ए कांसेप्ट जा कहचे कंडीशनल रोटे कांसेप्ट क्लियर हे गला एबे चलंतु स्लाइड देखि बुझि नबा कोन कोन दिया हिचे सब आई होप तमे जिनसरा बुझि पारलो तो देखो इफ आई हैव एनफ मनी आई विल गो टू जापान तो लिखाइ छि तेम देठी कंडीशन स्ट्रक्चर थ्री टाइप रो अछि जदि प्रेजेंट रे थिबो पास्ट थिबो कि फ्यूचर रे थिबो जदि इफ क्लॉज ता प्रेजेंट रे थिबो ले कोन कहउछि ना से लॉजिक पचाछ जे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल फ्यूचर रहइबो कोन तार माने होछि एटा देखि देबा टिके से नाउ से कोन कहला इन सच सेंटेंस इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट रे थिबो माने मेन फॉर देखो इफ आई विल फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड एन इनविटेशन देखो एटा कोन भूल करछि इफ आई विल फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड एन इनविटेशन तो जोना हमें प्रेजेंट कहउछो एटा फर्स्ट कंडीशन रो फार्मूला कोन इफ क्लॉज रा v1 रे रहइबो रिजल्ट कॉस्टा विल प्लस v1 रे रहइबो तो एठी कोन हेगला ना दीटा विल दे देला देखि परछ ना एडी विल रडा एडी ll रहला
तमन आम कौन करवा ए विल टाऊ काटिदेबा ये आंसर कौन हम एमती इफ आई फाइंड हर एड्रेस तो कड़े V1 गला आई विल सेंड हर एन इनविटेशन एटा गला राइट माने एटा कहार एग्जांपल देला फर्स्ट कंडीशनल एग्जांपल टा देला चेक करले आपण जानि परिबे एबे सेंते कोन देछि देखो तळे if two action take place one after the other in future and if the second action depends on the first action the simple present habo and the second action is in simple future tense आर शॉर्ट फॉर्म मीनिंग हला गोटे सेंटेंस रे दीटा फ्यूचर टेंस एका संग लिखियो नै देखो एग्जांपल के में दे जे he will come to meet you as soon as you will reach Delhi तो कौन हो जेडी will come to meet you टा फ्यूचर रहला as soon as टा कंडीशन रहला you will reach Delhi टा मध्ये कोन फ्यूचर रहला तो एडी कोन एरर हे गला ना as soon as संगरे हम दीटा फ्यूचर टेंस लिखि परियानी એટલે કેતળે મીટ કરી આસ્યો જેતળે તો દિલ્હી પહોંચ્યો એટા કંડિશનલ ક્લોઝ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିଶନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲେଖିବା कोन करिवा will reach ଟାରୁ will ଟା କାଟି दवा कोन करिया as you reach Delhi or as soon as you reach Delhi she will come to meet you आंसर टा एमिति हो गेटिंग इट एम दिस क्वेश्चन टा करछि तो बर्तन आगो जिबा देखो कोन लिखा छै if the government will become strict corruption will surely finish काहे रंग हे गला सेम लॉजिक देखो if clause रे एठी will plus v1 कला रिजल्ट रे मध्ये will plus v1 करछि ना नै तमने एठी कोन करबा एठी will टाको काटि दबा फर्स्ट कंडीशन कोन लिखाइ छै if the government becomes strict corruption will definitely finish in the above sentence से कोन करछि देखो ना will shall would will not come with the past that contains if as soon as माने डीटा डबल रहिबनी सेमती अनलेस अनटिल बाकन हमें नॉट यूज करबानी जोटा कि डबल नेगेटिव रो एरर हे जिवो कांसेप्ट देखो कोन हे छि लेट अस लुक एट द कांसेप्ट हियर पाटोडे बुझितबा गिव मी अ सेकंड वेट था देखिबा एटी के देखो कोन लिखाइ छै एटी ना there will be rush at the platform when the train will arrive देखो कोन एरर अछि एटी will be rush ता फ्यूचर रहला when the train will arrive में फ्यूचर रहला एटी when रहला कंडीशनल क्लॉज तो फर्स्ट कंडीशन अनुसार कोन होछि कंडीशनल क्लॉज रे फ्यूचर टेंस रहिबनी तो हमें कोन करबा ए will डाउ काटि दबा when the train will arrive काट देगिरी लिखि दाओ when the train arrives there will be rush in the platform the question सिंपल करथिबो there will be rush at the platform when the train arrives concept clear हे गला then next लिखिबा if the clause is in past tense माने कोन हेतिबो एटा होची सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल माने कोन हबो इमेजिनरी केस रो नेगेटिव रिजल्ट एठी हम कोन देखिबा वर्ब will न हे किरी would रहबो एडी v2 रहबो आर पटे कोन हबो would plus v1 might plus v1 एटा होची जनरल फार्मूला हमें ए कांसेप्ट यूज करी कि ए क्वेश्चन जाओ सॉल्व करिया कोन देछि देखले if I had money okay I would lend it to you then the third the लेछि if the clause in past perfect माने कोन हबो एटा थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर had plus v3 तले कोन हबो would have plus v1 could have plus v1 might have plus v1 ए स्ट्रक्चर देछि ओके तो से अनुसार क्वेश्चन जाक हम सॉल्व करिबा let us try देखिबा एटे कोन लिखा है जे क्वेश्चन जाक देखो समाधान करे चेष्टा कर पिले if I had seen you I could have stopped my car बिल्कुल करेक्ट अछि काहे कि करिबा ना had plus v3 अछि माने कोन हबो would have could have might have plus v3 हबो तब कोन लिखा है जे इन सच सेंटेंस हम if जगह रे कोन करिया खाली had मध्ये लिखि परिया बिल्कुल जेंते कि एटे लिखा है जे कोन had I seen you त if I had seen you रा मीनिंग जहा had I seen you meaning मतलब exactly the same then if जगह हम had लिखले ही परिबा I would have stopped my car correct तो एटी कोन फार्मूला डा देछि एबे बर्तन हम आगो जिबा क्वेश्चन जो सॉल्व कर देखिबा हमर क्वेश्चन हे परछि ना नै लेट अस ट्राई ओके अच्छा एटी ता पूर्व देछि अदर टाइप ऑफ कंडीशनल कोन देछि ना एटा होछि इमेजिनरी कंडीशन जेमते कहला कोन if I were a bird I would fly in the sky correct इमेजिनरी कंडीशन को जगह यूज हबो ना गोटे होची if गोटे होची I wish गोटे होची as if मीनिंग हला जेपरी की
as if आज दो थिले मध्य imaginary condition rule हबो एग्जांपल जाउ जिन देछि एठी देखो he scolded me मन से मते गाली कला as if he was my father तो he were my father हबो काहे कि imaginary condition रे were लागे क्लियर चलंतु एबे हम क्वेश्चन सॉल्व कर देखिबा हमर 10th चैप्टर रे सरी जाय छी तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखंतु संजीव डैश कराटे क्लासेस एवरी डे माने कोन हे गला एडा हैबिचुअल एक्शन हे गला हन नै हैबिचुअल एक्शन माने v1 फॉर्म आसीबो तेनु एडी करिवो आंसर ए संजीव अटेंड्स कराटे क्लास एवरी डे सेमदी द मार्केट डैश यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग माने एडा कोन जनरल फैक्ट विषय कोची प्रेजेंट सिंपल आसीबो तेनु द मार्केट इज यूजुअली नॉइज एक वचन हबो द पोस्टमैन डैश द लेटर ऑलरेडी माने कोन करि सारला परे कहूची माने प्रेजेंट परफेक्ट आसीबो तेनु आंसर हबो कोन द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर ऑलरेडी एडी आंसर ता डी हबो गेटिंग इट क्लियर आराम से बुझे थिबो तापर जेबा नेक्स्ट को एड क्वेश्चन कोन से देखंतु ओके गिव मी अ सेकंड चार नंबर देखो कौन लिखा है द एथलीट डैश फॉर अमेरिका टुमारो फ्यूचर को जाउची प्रेजेंट रे फ्यूचर को गले कौन हबो ओके ओके देयर इज अ क्वेश्चन जने के पचार चंदी द पुलिस डैश मी ऑन माय वे फ्रॉम लास्ट टाइम एडी हबो स्टॉप्ड हबो एस टी ओ पी पी ई डी करिवो लास्ट नाइट अछि माने आंसर दा कौन हबो पास्ट को जीवो पास्ट हबो स्टॉप्ड करिवो हला आई गॉट योर आंसर आकाश यू गॉट योर आंसर ना एडे लिखा छै बापा लास्ट नाइट लिखा छै ना स्टॉप्ड करिवो वेरी गुड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन पचार दे परिवो एडे फोर्थ रे देखो द एथलीट डैश फॉर अमेरिका टुमारो आज हैज लेफ्ट माने प्रेजेंट रे हबा कथा नाही एडे आंसर कोन करिवो आमे जतले फ्यूचर को वर्णना करछु आमे कोन कहितलु 10th रे पढथिलु आइदर प्रेजेंट सिंपल हबो नले प्रेजेंट कंटीन्यूअस हबो जेमदे कि माय सिस्टर लिव्स फॉर गोवा टुमारो काली जीवो किंबा मो कहबी द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट इन 2 मिनिट्स आमे कहितलु फ्यूचर पे आमे कोन करि परिबा ना सिंपल प्रेजेंट किंबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस करिबा तेनु एटी करेक्ट आंसर कोन करिवो दैट एथलीट इज लिविंग फॉर अमेरिका टुमारो एबे डाउट आसीबो सर विल लिविंग काई हबनी will plus be plus ing माने will be living हेतांता एटी पर be नाइ रे will पर डायरेक्ट ing फॉर्म लागिबनी गॉट योर आंसर तुम देठी देखिबो will have left कम पे भूल हबो सर will have left माने फ्यूचर पळै थिबो जदी ए सेंस रे कहउछ एटी टुमारो न लिखि करी by tomorrow वाटा लिखा हेतांता तेन करेक्ट आंसर एटी कोन हबो is living जानियाला समझते भल से बुझी जाओ जेंति 5 संजय डैश हिज रूम फॉर द पास्ट 3 आवर्स तो पास्ट 3 घंटा हला कोन कामटा कंटिन्यू चल जी माने एक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माने एटा सब बळे परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंस रे आसीबो तो कोन कर विल बी पेंटिंग हबनी फॉर सेंस फ्रॉम माने परफेक्ट टेंस आसीबो आंसर करिबो सी हैज बीन पेंटिंग हिज रूम फॉर द पास्ट 3 आवर्स कांसेप्ट क्लियर होची ना नहीं होना नहीं मते बुझाओ नेक्स्ट द मिल्कमैन डैश टू आवर हाउसिंग एस्टेट एवरी मॉर्निंग प्रतिदिन माने कोन बडा हैबिचुअल एक्शन v1 हबो तेनो द मिल्कमैन कम्स टू आवर हाउसिंग एस्टेट एवरी मॉर्निंग आंसर इट डी हबो क्लियर समस्तनकर कांसेप्ट क्लियर अछि ना नै मते बुझाइबो नेक्स्ट को जेबा उदित डैश क्रिकेट सिंस प्राइमरी स्कूल व्हेन ही गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन क्रिकेट टीम एडी क्लूडा कोन अछि एटा क्लूडा अछि व्हेन ही गॉट सिलेक्टेड माने एटा कोट टेंस ता अछि रे पास्ट टेंस अछि ना तो एटा पास्ट से सिलेक्ट हवा पूर्वरो क्रिकेट खेलतला माने कोन हबो जे खेली आसुथुला माने एडी पास्ट ऑफ द पास्ट हबो पास्ट ऑफ द पास्ट माने एडी कोन हबो पास्ट परफेक्ट किबा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अब ना नै मु जेंदे कहबे ना ही माने ही टोल्ड मी द स्टोरी आफ्टर ही हैड लेफ्ट माने कोन आगो से गला तापर ये कहले इन द सेंस रासिबो तो एडी कोन बचिबा ना से सिलेक्ट करबा पूर्व क्रिकेट ता पूर्व खेली आसुथिला माने एटा पास्ट अछि गाडीटा लेफ्ट टर्न नबो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हबो तेनो करेक्ट आंसर कोन हबो एडी हैड बीन प्लेइंग वेरी गुड करेक्ट आंसर
केटा आकाश वेरी गुड हैड बीन प्लेइंग इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक 8 को देखिए द कॉन्फ्रेंस डैश ड्यू टू लैक ऑफ कोरम कोरम माने किछ गोटे रीजन रीजन पई माने आपन को सूचित करा गला जे कॉन्फ्रेंस ता स्थगित हो जाय सूचित कला माने कोन बुझिया हम अपडेट दोचु अपडेट ऑन ए डेवलपिंग सिचुएशन माने कोन हबो एटा प्रेजेंट परफेक्ट यूज हबो ना जिंदे के सो फार किबा द रिजल्ट हैज जस्ट बीन अनाउंस्ड अपडेट सेंस में कोन करछु प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करछु करेक्ट आंसर एटी कोन करबो द कॉन्फ्रेंस हैज बीन पोस्टपोन्ड आंसर एटी ए हबो डन एवरीबॉडी समझ बुझाइथिबे आठला एबे 9 नंबर स्लाइड को जीवा कोन लिखा छै एटी 9 नंबर स्लाइड रे यू आर लेट द ट्रेन डैश ऑलरेडी माने कोन तू लेट हलु ट्रेन ता ऑलरेडी पळेलानी अपडेट दोछु ऑलरेडी पळेलानी माने आंसर कोन हबो यू आर लेट द ट्रेन हैज लेफ्ट ऑलरेडी एट आंसर बी हबो 10 एवरीवन डैश अबाउट वेस्ट इंडीज अचीवमेंट इन द 2020 वर्ल्ड कप नाउ ए डेज जेतले वर्ड अछि सब बडेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कहबो जेंति के मो कहि परिबे नाउ ए डेज आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू मूवी नाउ ए डेज आई एम राइटिंग ए न्यू बुक नाउ ए डेज माने प्रेजेंट कंटीन्यूअस हबो तो आंसर करू एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज आंसर एट डी हबो क्लियर फॉल्स बुझी ता आंसर हबो आपनकर डी 10 गला पर एट फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड राधा डैश एट 5:30 ए हैबिचुअल एक्शन माने कोन गेट्स अप आंसर एटी हबो वी डैश फॉर यू वेट माने कोन वी आर वेटिंग फॉर यू हबो तबर आई डैश द जॉब आई हैव फिनिश्ड द जॉब हबो अपडेट सेंसर लागिला तापर एटी कोन हबो फॉर द गर्ल्स आर रिवाइजिंग द लेसन्स नाउ नाउ माने कोन वर्तमान एक्शन पर हम अपडेट दोचु तापर इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग काहे कि फॉर सिंस फ्रॉम माने परफेक्ट लागिबो तापर आई डैश हर सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव नोन हर सिंस माय चाइल्डहुड सेम लॉजिक फॉर सिंस फ्रॉम थिले हमें प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करू तात although he tried hard he could not have tried past tense अछि ना तने he could not fix the machine fix माने रिपेयर एटी लिखा छै कोन she said that she dash she was not interested अब said अछि past tense is was हबो she was not interested in the offer तमरे what did you do then माने कोन सेते बेले ने past tense जाउ छै तेनु what did you do then हबो we dash the work by Monday माने future रूल सरे देथिबो we will have finished by Monday हबो my mother dash me a watch for my birthday gave me a watch हबो I expected to fail the exam but I passed after all expected past tense अछि प्रेजेंट कर कोन पास्ट आ करियो but I passed after all एम द आंसर हबो क्लियर लिखा जे फाइंड व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर पार्ट उठे देखिबा जो he has saved enough money she will buy a new car next week कौन एरर थिबा कहले देखि can anyone say what is the error in this question कहि परिबो कि ना मन रखे तो एडी जो he has saved enough money से ओडे कार किनिबो तो ओडे प्रेडिक्शन सेंस रे कहउछु प्रेडिक्शन सेंस रे कहले एटा आंसर कोन हबो will buy को कैटेगरी is going to buy करिबो In the 14, Rama hopes to become an IAS officer after she completes her graduation. कौन error थी बड़ी? Hopes to become an IAS officer after she completes her graduation. No error हबो ठीक अछि. 15, Rahul along with his friends is going to have a party in his apartment after the match ended नहीं after the match ends हबो एडी काहे के हबो ना देखो is going to attend अच्छी माने कौन हो फ्यूचर को जाउचे ना एटा प्रेजेंट हबो एंड्स हबो 16 नंबर क्वेश्चन कौन देछि हरित had not taken any decision until he had studied the case देखो दीडा एक्शन अछि गोटे डिसीजन नबा आ गोटे केस टा स्टडी करिवो आगो कोडा हेतिवो केस टा स्टडी करिवो ता पर डिसीजन नेथिवो तुनेटी डबल त हबने एटी had not taken को v2 करिवो लिखिवो एटी did not take पास्ट ऑफ द पास्ट कांसेप्ट असला केमिते ना हरेत किछि डिसीजन नला नै नथिला जते पर्यंत से केस टा स्टडी कर नथिला तने आंसर कोन करिवो ना हरेत डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस कांसेप्ट क्लियर थिबा नेक्स्ट देखो
डायरेक्शन 13-25 7 नंबर पढ़िबा I tried to tell Shivam what has happened but my words were not audible कौन एरर अछि एठी I tried to tell no tried माने एटा past tense अछि लेट has हबनी एटा कोन करिवो had करिवो what had happened but my words were not audible 8 नंबर क्वेश्चन को देखिबा the teacher taught the students since morning therefore she was exhausted टीचर exhausted थिले काहे कि ना पढ़े आसुथिले माने taught हबो कि past perfect continuous एटा करिवो had been एटा करिवो teaching continuous आस्थिबो tired हला 19 I have been studying in my room for last evening एडी कोन एरर हला पुओ ना देखो एडी वर्ड लिखा है last evening दा point of time को बुझौची point of time बगर for बसिबो ने एटा करिवो since हिंदी कोडिए Rita came to the class much earlier than I expected I had expected हबो काहे कि ना आगो एक्सपेक्ट करथिबु जहा तापर रीता आसीथिबो एटा जेहेतु पास्ट टेंस अछि एटा पास्ट परफेक्ट हबो तेन मच अर्लियर देन आई हैड एक्सपेक्टेड आंसर ता एमदी हबो क्लियर नेक्स्ट को जबा एट लिखा छै कोन many studies suggest that the number of cancer patients is पर ing फॉर्म आसीबो ग्रो काटी के लिखिबो growing एटा आंसर हबो growing is growing day by day in the biasi Ravi told his father that he would not be able to come back on time if it rains देखो एटा told एटा past tense अछि he would not be able to past tense अछि हेला एटा rains हबो कि एटा past tense करिवो rained if it rained एमदी हबो तब 23 I remember what she has told me about her future plans तू जतले मने पकोचु माने भाबो एडी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अछि मने पकोचु माने प्रेजेंट रो कोडी के जिउ पास्ट कथा मने पकेबो पास्ट कथा मने पकेले कोन हबो what she has हबो कि एडी करे what she had told me about her future plans clear तब 24 I will let you know as soon as I will get double will हबने एडी will अछि एडी will हबने as soon as I get हबो get any information about your missing brother in the 25 we reached the station before the train arrived sequence पका train arrive हवा पूर्वरु एटा past अछि माने एटा कोन हबो past perfect हबो एडे reached जगह काटे कोन लिखिबो had reached करिवो so we had reached the station before the train arrived answer time देव 25 questions clear हे गला समस्त टेंस रो let us go to the next slide देखिबा कोन अछि कोन नाही ओके एठी पुनी लिखा है जे एरर कोन अछि देखो कोन लिखा है जे देखिबा क्वेश्चन जगह can anyone imagine me to wear a red or a blue tie कोन अछि imagine me परे 2 + v बनबनी एडा लिखिबो wearing ing फॉर्म आसीबो wearing a red or a blue tie हिंदी 22 12 नंबर आसा देखो this change of timetable will mean us to leave much earlier every day एडी कोन हबो 2 + v leave टाउ कैटेगरी imagine us leaving ing फॉर्म करिवो since let us go to the cafe when the movie will be over when the movie is over haba will be nahi in the 14 I will not move from here until you will get it back एडी will रहला एडी will रहबनी until you get back एडी will ला कटि जिवो पॉइंट क्लियर एमदे बुझिबा आगु को जिबा देखो कोन लिखा छै by the next August he will by माने एटा फ्यूचर परफेक्ट हबो will wrote हबनी एटा आंसर करिवा will have written he will have written his next book getting it same they do not plant the cotton until the rain will fall हबनी एडी खाली falls हबो 18 the river will not begin to rise until the train will fall again same reason dida will happening until the train falls rain falls in the 19 much to our regret the train left before we reached माने एडी had left हबो काना तो reach करिया पूर्वरु पळैथिला ट्रेन दा क्लियर नेक्स्ट को देखिबा 20 नंबर कौन लिखा है एठी if it snowed tomorrow we go to sky देखो
tomorrow अछि माने कोन हबो एटा future if it snows हबो SNOWS हबो कारण एठी will अछि माने एटा V1 हबो फर्स्ट कंडीशनल रूल टा 21 कोन दोची had you informed me earlier I would have certainly purchased हबो कि एठी purchased हबो V3 हबो एठी आंसर PURCHASED purchase the laptop करियो 22 I learned from my father that honesty was हबो कि is हबो यूनिवर्सल ट्रूथ अछि इट इज द बेस्ट पॉलिसी देखो कौन से क्वेश्चन रे कोन डाउट अछि कि यू कैन आस्क देन 23 टा आंसर देखिबा व्हाट इज देयर if I would be a millionaire हबो कि if I were हबो दिस इज वेरी इजी imaginary case 24 he seemed to be the embodiment of strength and courage far above all the men I saw हबनी I had seen or have seen हबो कहीं ना एटा मो कोन अनुभव विषय रे कहूची एक्सपीरियंस माने सबले प्रेजेंट परफेक्ट हे परिबो नले पास्ट परफेक्ट हबो अकॉर्डिंग रिक्वायर तापर द प्रिजनर वॉक स्लोली फॉर दे न्यू दैट as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog no error हबो एटा नाही नो एरर हबने पिले एटी गोटे एरर कोन अछि वॉक टा पास्ट टेंस अछि तेने एटा क्रॉस जगह रे क्रॉस्ड करिवो ओके सो नो एरर हबने एटी पार्ट टा कोन रहबो सी रे एरर अछि so this much is done then let us solve another question अछि find out the error ताको हम देखिबा एठी ओके जत्ते मैक्सिमम क्वेश्चन करिया सताम पे भलो हबो तो क्वेश्चन देखो कोन डाउट अछि मते पचारिबो when you will find out any solution to this problem we will become able to finalize the project कोन एरर अछि पिले एडी will अछि एठी will अछि डबल will रहबनी ए will टा काटि दियो when you find out हबो 2 नंबर whenever you are coming here you bring एटा गोटे जेतोला आसु सबोला आसु माने एडी कोन हबो जे जीरो कंडीशन हबो whenever you come हबो ओके तीन it is appearing to me हबने it appears to me हबो appear वाटा प्रेजेंट टेंस रे लागे it appears to me that you are plotting against your friends 4 the old man who is sitting in that room lived here for more than a month habo ki it has been living here karibo has been living here kain karibo na पर लाइन रे लिखा जाय कड but he has never created any problem माने कोन ए पर्यंत से सेडी अछि तेने एटी आंसर कोन करिया has been living here करियो done everybody एटा सल्ला नेक्स्ट को जिबा देखो ए मिसोजिनिस्ट माने कोन गोटे लोक जे के कोन वुमेन को हेट करे ए मिसोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग हबनी हु हेट्स करिवो देखो हम आपन मन पे सॉल्व करछ आंसर जाओ चेक कर देबे 6 द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर 9 ही गेट्स अप हबो काई कहला एटा हैबिट सेंस रे लागेला तने ही गेट्स अप करिवो तो nowadays माने कोन हबो एक्शन टा कंटीन्यूअस अछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस लागिवो तो nowadays he teaches हबनी he is teaching करिवो ओके नेक्स्ट को जिबा कोन लिखा देख लेडी he seems to be happy because his parents had come हबनी जदी एबे हैप्पी अछि माने का प्रेजेंस एबे आसी चंदी प्रेजेंट सिचुएशन को बताउची तेनु कोन करबो he seems to be happy because his parents have come करिवो 9 नंबर it is high time माने कोन हबो एटा v2 आसीबो you started करिवो it is time it is good time it is high time माने v2 फॉर्म रहबो always remember तापर I have come to know that your father has died हबो कि लास्ट वीक अछि माने has कट देबो only died हबो 11 many of my friends wished to come here today but none of them arrived nahi have arrived yet माने प्रेजेंट परफेक्ट रहबो क्लियर एते मन रखते पहले आंसर उडा को 12 नंबर ता देखिबा she says that she will take her umbrella in case it will rain कोन एरर अछि पहले देखो डबल विल हबनी तेने विल टा काट दियो in case it rains हबो 13 I will let you know as soon as I will get any information about your promotion same logic कोन अछि ना सर देखन तो एटी will अछि ए will टा काट देबो I get हबो 14 when I will be 30 most of my friends will be above 35 be sure एटी मध्ये एरर कोन अछि देखो एटी will हबो कि तेनु कोन करियो एटी when I
I will be 30 when I am 30 करिवो 15 this is indeed the first time in my life that I hear such an interesting story and here को काटी कौन करिवो have heard करिवो काहेकि अनुभव ता लाइफ रे एडा प्रथम अनुभव अनुभव सेंस रे प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुए चल देखिबा एडी 16 बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द स्टेड तो एडी कोन एरर अछि पिले देखो एडी हैड स्टॉप्ड अछि एडी हैड पुल्ड अछि एडी हैड ता काटि दबा कारण जोडा आग होइथिबो सेटर हैड रहइबो पास्ट ऑफ द पास्ट बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द स्टेड 17 आई हैव बीन नोइंग हिम कोन एरर अछि बीन पाखरे नोटा आईएनजी फॉर्म रे आसीबनी आई हैव नोन हिम करिवो ए एन ओ डब्ल्यू एन करिवो क्लियर 18 he uses to study हबो कि he used to study हबो and then he goes to bed हले he uses to यूज करिवनी खाली लिखि दबो he studies रेगुलर हैबिट अछि he studies at least till 10 o'clock and night and then he goes to bed ठीक अछि 19 if I had a few hours to spare he would हबो कि he will हबो काहे will करिया न देखो एडी if अच्छा he would spend them in a public library sorry टिके भूल हे गला 19 नंबर टा माथर देखिबा लेट मी रीड इट हां सावधानी हटी दुर्घटना घटी 19 नंबर टा ऑथर पढिबा if he had a few hours to spare he would spend them in a public library no error करिवो ओके पढिए गोटे मिनिट रह जा टिके all the flowers in his gardens will surely die before the rains will fall और कोन अछि नो एरर होबो एटा आगु जीवा वर्तमान कौन से देखि दबा if I would have done this if I had done this हबो कारण would have दिथर ता लागि बनी if I had done this हबो तब if she had told me that her husband never lived within his means I would not have lent him the money no error हबो I wish he saw you when you were अच्छा एडी कोन हबो 100 जगह रे he had seen यूज करिवो कौन एरर अच्छी ना देख जो आई विश वाटा यूज कर पिले आ पाखे केत V2 हो पार केत हैड प्लस V3 हो पार दुईटा पॉसिबिलिटी अच्छी V2 टा हम इमेजिनरी केस रे आउ हैड प्लस V3 टा हम रिग्रेट केस रे जमती कि आई विश आई वेर ए रिच मैन इमेजिनेशन आई विश आई हैड लिसन टू यू काश तो कथा शुणी था कि रिग्रेट सेंस रे आसीबो हैड प्लस V3 हो क्लियर देन हम आगु को जीवा 24 if we had Mohan we would have won the match very good no error haba he advised me to do as he did but I did not pay any attention to his advice kon error achi he advised me to do as he had done karibu past achi na past of the perfect past of past he advised me to do as he had done but I did not pay any attention to his advice आज सेशन टा एतिक रखा टुमोरो नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक विथ ए न्यू सेशन टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल हैप्पी लर्निंग।